Good morning, team. RBI yesterday came with a report on trends of banking. So this report has been uploaded in our Telegram channel. So I would suggest everybody to read that. A wonderful report. One interesting aspect of the report is we have about 46 crores, 46.3 crores of Jandan account. Only 8.2% is zero balance as of today, as of August 2022. And 81.2% were operative as of August 2022, which is higher than 76%, which was in 2017. Even the deposit has increased, and 56% of the Jandan account is held by women. So these were a few data which I read. Even RBI has cautioned on retail loan, which is rising faster. So there is a caution there, and it has cautioned even NBFC on rising interest rates. Coal India chairman Pramod Agarwal said company will achieve the production target of 700 million tons in FY23. Ministry of Power and DRDO signed MOU for developing mitigation measure for of early warning system for vulnerable hydro projects and power station. So most of our hydro projects are in Himalayas, where sudden flood, eventuals, landslide, glaciers, lake, and geo hazard, almost impacts these dams or these power projects. So this agreement will help them to navigate this kind of sudden floods. Radiant Cash Management Services IPO subscribed just 53% on the last day. So whatever I can notice, there is a lack of interest in IPOs. So one has to be very careful. And after 3 months or after 2 months of the IPO, I see the stock going below the IPO prices. So IPO is not something we need to look at. It takes at least 2 years for these companies to prove themselves and to rally. So IPO or a newly listed stock is purely avoid from our side. Laurus Lab had a fire accident in Vizag plant where 4 people have died, due to which yesterday the stock corrected. Capacity has received order worth 695 crores from Safi Burani Upliftment Trust. It is for Mumbai project in Bendi Bazaar. IEX forms a wholly owned subsidiary to explore business opportunity in carbon markets. L&T Construction has secured multiple contracts, multiple EPC contract in India and overseas. One for 90 megawatt floating solar PV at Omkaleshwar, Madhya Pradesh. And in UP also they got one project. In North Africa for 400 kV and 200 kV transmission lines. In Malaysia, 132 kV substation, they have got a contract. Lemon Tree has signed a franchisee agreement for 32 rooms property in Dehradun under company brand Key Light by Lemon Tree. The hotel is expected to be operational by December 2023. RVNL has received a letter of award yesterday for appointment of project implementation agency for implementation of UTF Harbor project in Maldives. 1,544 crore. It is one of a very big project of recently, and the order book is very comfortable for RVNL. BSE has informed SEBI that SEBI has granted its final approval for introducing SSC as a separate segment on BSE. India pesticide has received the environment clearance from Ministry of Environment for setting up of manufacturing plant for agrochemical and intermediates, API, ingredients and fine chemical. This is in UP, in Sembur or something. So I'm not very sure about the name, but it is in UP. So this can be positive, but RVNL is something which we need to concentrate on as budget is nearing, and L&T Construction
market has recovered in the last 2 days, but we need to see how the trend develops in the next few days. But there are budget which is coming in the next 30 days. So budget related stock, defense related stock, railway related stock can see some rally, but wait for some dip to buy into this stock. With that, over to you, Brijesh. थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बहुत सारे उससे हाईलाइट्स भी की डेटा, जिसमें देखा जाए तो अगर जनरल अकाउंट देखा जाए तो 46.3 करोड़ जनरल अकाउंट टोटल ओपन हुए, बट ये जनरल अकाउंट देखा जाए तो वो है, और जीरो बैलेंस जो अकाउंट है वो से 0.82 है एज ऑफ अगस्त 22, और इसमें से हम देखा जाए तो 82% अकाउंट ऑपरेटिव अकाउंट्स है और 76% अकाउंट्स हम देख रहे थे 2017 में। और डिपॉजिट्स भी देखिए वो ग्रो हुई है। जनरल अकाउंट भी मेजॉरिटी हेल्ड है वो फीमेल वुमेन्स का इसमें डोमिनेशन सबसे हाईएस्ट है। और उन्होंने सेकेंडली इस पे कॉशन भी, जो रिटेल लोन्स की जो जैसे बढ़त हुई है उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा कॉशन किया है, और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के चलते एनबीएफसी को भी थोड़ा सा उन्होंने कॉशन किया है। रेडियंट टेक्नोलॉजीज के कैश मैनेजमेंट सर्विसेज उनको आईपीओ है और टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए लास्ट ईयर तो 53% होने वाला है। हम देख रहे हैं जैसे आईपीओ में थोड़ा लैक ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, और अगर आईपीओ का देखा जाए तो 2 से 3 महीने के बाद आईपीओ को जो अच्छे नहीं रहते वो अपने स्टॉक पर अपने जो लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चले जाते हैं, तो हमें ये सब आईपीओ थोड़े अवॉइड ही करना चाहिए। मध्य प्रदेश इसमें डीआरडीओ ने मिटिगेट करने के लिए इन लोग ने ईडब्ल्यूएस जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो डेवलप किया है, और ये बेसिकली वर्नेबल जोन्स में रहेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर और डीआरडीओ मिलकर कर रही बेसिकली हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि हिमाचल और वो साइड जोन्स में जहाँ पे फ्लड्स और अवलांचेस की और जियोलॉजिकल जो इश्यूज आते हैं उसके चलते जो हजार्ड्स आते हैं वो अर्ली वार्निंग देख सकते हैं और उसके लिए वो कड़ी अपने स्टेप्स ले सकते हैं। अपासाइड इंफ्रा को भी सैफी बोरान ट्रस्ट से एक इन्वेस्टमेंट के लिए मुंबई बेस्ड लैंड पार्सल के लिए बेंडी बाजार में डेवलप करेंगे। आईईएक्स भी अभी कार्बन में भी वो जाना चाहते हैं। एलएनटी ने 19 मेगावाट का पीवी प्रोजेक्ट है वो एमपी में तैयार करेंगे। एक यूपी में रहेगा 400 किलोवाट का, और ट्रांसमिशन लाइन और 132 किलोवाट का वो मलेशिया में भी करेंगे। लेमन ट्री ने एक नया होटल ओपन किया 132 कीज के साथ ओपन करेंगी। आरवीएनएल को भी अपॉइंट किया गया प्रोजेक्ट इसके लिए बेसिकली 1554 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उनके ऑर्डर बुक के हिसाब से भी देखा जाए तो इन लाइन है। बीएससी से भी सेबी से अप्रूवल मिल गया एक एफएनएफ के लिए, जो कि एसएससी का अप्रूवल मिल चुका है। इंडिया बेस्ट भी एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करना चाहती है यूपी में। बेसिकली ये पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल्स को डेवलप करना चाहिए। जैसे अभी बजट ईयर आ रहा है तो बजट के स्टॉक्स जैसे आरबीएनएल, डिफेंस के स्टॉक्स, रेलवेज के स्टॉक्स पे हमें फोकस रहना चाहिए, और ये सब स्टॉक्स को लगता है तो अगले 30 डेज थोड़े वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई डेप्थ मिलता है तो हमें उसे अपॉर्चुनिटी जैसे सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज देखा जाएगा टाटा स्टील और ट्विटर हाई लोग ने एक साइन की एग्रीमेंट वो की जॉइंटली वर्क करेंगे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए। ट्विटर एक स्टार्टअप है इंक्यूबेटेड आईआईटी मद्रास की, और ये कंपनी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई पॉड और प्रोपोर्शनल सिस्टम डिजाइन में। ये पार्टनरशिप बेसिकली सॉल्व करेगा जो डिजाइन रिलेटेड चैलेंजेस है, और हाइपरलूप में जो आने वाली रियलिटी और हाइपरलूप की रियलिटी भी बना सकते हैं। सो ओवरऑल एक न्यूज छोटी न्यूज है, बट करंटली टाटा स्टील में हमारी होल्ड रेटिंग है टारगेट प्राइस 105 के साथ। आईटी सेक्टर भी ये न्यूज है कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि स्पेंड है वो 30% रहती है आईटी रेवेन्यू की, और ये उन्हें लगता है फ्लैट रहेगी और या नेगेटिव रह सकती है 23 में। और अगर टॉप 4 कंपनीज में भी देखा जाए तो एटलीस्ट 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनका पीएसएफएल सेगमेंट से दिख रहा है, तो म्यूटेड ग्रोथ रह सकता है। बेसिकली जो स्लो डाउन दिख रहा है मॉर्गेज सेक्टर में और जो यूएसए और यूरोप में जो रिसेशन की हालात बढ़ रहे हैं, इसके चलते इंसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर जो बेस है वो एकदम हाई है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा आ सकता है। However, ओवरऑल जो टेक स्पेंड है वो भी राइज हुआ है 11%, बट एक्चुअल ग्रोथ जो है वो नेग्लिजिबल है इन्फ्लेशन के चलते। सो हमें लगता है कि जो आईटी कंपनीज है उसके ऊपर जो ग्रोथ है और जो ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है, बट टेक जो स्पेंड है वो क्लाइंट कट कर सकता है, और डिसीजन जो वेंडर कंसोलिडेशन में भी हो सकता है। इसी स्पेस में अगर हम देखेंगे तो लार्ज कैप एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस ये बेटर रह सकती है।
अगली न्यूज देखेंगे, एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी रेट्स इंटरेस्ट रेट हाइक की है बल्क डिपॉजिट में, जो कि 2 से 5 करोड़ का है, और न्यू डेट्स रहेगी, न्यू रेट्स जो लागू होगी 27 दिसंबर से होगी। हाउसिंग सेल्स देखा जाए तो 7 इंडियन सिटीज में नए रिकॉर्ड पे है। इसमें से देखा जाए तो ये रिपोर्ट अनलॉक ने दिया है, टोटल फॉर्म में 3,64,000 यूनिट सोल्ड हो गए 2022 में, जो कि 2,36,000 थे 2021 में। ये टॉप 7 सिटीज है इंडिया की। पूना वाला फिनकॉम ने भी कहा कि वो एम कर रहे हैं अपनी जो लोन बुक बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ के अगले 5 साल में, ऐसा चेयरमैन ने कहा है। आईएक्स ने अनाउंस किया कि उनकी जो सब्सिडरी इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज वो एक्सप्लोर करेगी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि कार्बन मार्केट में है। जो जनरल सन से जो कि प्रमोटर है एनबीएफसी बजाज फिनसर्व के, उन्होंने एक ब्लॉक डील के जरिए इक्विटी परचेज किए है 100 करोड़ से ओपन मार्केट से। Technicals and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that Nifty has recovered by 117 points and it closed at 18,132. Majorly the metals, PSU banks and realty were the counters which moved the Nifty on the higher side, whereas the FMCG was the only one which traded with slightly negative. Coming to the technicals, so what we are observing, the Nifty is witnessing a pullback of the previous week correction. So we believe that on the higher side, 18,150, 18,300, these are the levels where we can see some kind of amount of heat, some kind of pressure on the higher side. So majorly we believe the Nifty will be trading in the range of 18,300 to 17,800 just for the next couple of days. So maybe on the post expiry, whenever there is a recovery about 18,350 levels, again the momentum will be back in action and Nifty should be heading higher on the upside. Having said this, the lower side, there is the lows are not very much, like we seen a sense that 17,800 to 17,500 will be the lower side band. In case of further sell-offs, these lows will be protected. We don't have a major negative bias on the lower side. 17,800 to 17,500 should act as a demand zone. On the higher side, 18,300. And anytime when there is a breakout above 18,300, 350 levels, the positive momentum will be back in action. Coming to Bank Nifty also recovered close to 229 points and the close at 42,859 levels. So technically, even the Bank Nifty is witnessing a bounce of its previous week correction. On the higher side, we believe this 43,150 to 43,300 might act as a resistance for the Bank Nifty, whereas on the lower side, 42,300 to 42,000 will act as a demand zone. In Bank Nifty, we are observing there was a selling seen on the 21st December, and the high of that particular candle was at 43,614. So anytime during the next week after post expiry, the Bank Nifty rallies above 43,600. Even the Bank Nifty, the fresh momentum will be in the action, and Bank Nifty will be heading higher. So both the indexes for the next 1 or 2 trading session, we are expecting a range bound kind of move with the lower side support at 42,300 for the Bank Nifty and 17,800 support for the Nifty. Coming to derivatives data, Nifty futures has seen a short covering in yesterday's session to the tune of 0.97%, which was a reduction of 0.12 million shares. The PCR has jumped from 0.96 to 1, which is a positive sign, and the major additions in the put options were seen at 18,000 and 18,100 levels. So this should be a support. And in the call option, the major additions were seen in 18,400 and 18,600 strike price. So this should be the resistance from the derivatives point of view. Coming to Bank Nifty has also seen a short covering to the tune of 8.21%, which is a decrease in OI, which was a reduction of 0.42 million shares. The PCR climbed from 1.29 to 1.36, which is a positive sign. The major addition in put options were seen at 42,500 and 42,700. So this should be the support. And in call options, 43,100 and 43,500. So this should act as a resistance. The rollover as of yesterday is 50% compared to 30, in Nifty compared to 39% from the previous expiry, and Bank Nifty is 54% compared to 44% as from the previous expiry. The major the positive stocks were India Bull Housing Finance, Nalco and Jindal Steel.
And the negative stocks which we saw in yesterday's session, Amaraja Battery, Laurus Lab, and Crompton Gives. Sector specific, we believe metals were the one which were in the focus yesterday. So Hindalco and JSW Steels are looking positive. So that can see some good amount of upside momentum. Lastly, the FI data. So FIs has reduced their short position. They're only short by 8,000 contract, which is neutral. And the long short ratio has recovered from 43 to 47%. So this is also a positive sign. So major positive will turn whenever it turns above 50% mark. So the bias is slightly, so bias will be turned positive above 50 levels. So that's all from my end. I'll hand over to Bhavesh for more research updates. Yeah, good morning, team. So, starting with IT sector. So, according to media reports, the slowdown in US and recession in Europe will have an impact on banking and financial services tech sector spending. So, overall, banking and financial services account for 30% of Indian IT. And last year, they grew by at least 10% YOY for most of the large companies. So this is like a slowdown will in this kind of environment. Some companies like Infosys, HCL, and TCS are expected to do better than others. Secondly, on Tata Steel, so Tata Steel and Tutur Hyperloop have signed an agreement to jointly work on development of Hyperloop technology. So this is nothing but just to solve the materials and design related challenges. So a small marginal positive for Tata Steel, nothing much to look into. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you so much, sir. Good morning, everyone. Further news updates are the largest private sector lender, HDFC Bank, has hiked interest rate on bulk fixed deposit of more than 2 crore to 5 crore. As per the bank's official website, the new rates are effective as on 27 December 2022. Housing sales in the 7 Indian cities have set a new record in 2022, reaching the previous high of 2014. According to a report by NRO, the property consultant firm said that around 3,64,000 units were sold in 2022 against 2,36,500 units in 2022 across the top 7 cities. Indian Energy Exchange on Tuesday announced setting up a wholly owned subsidiary, Indian Carbon Exchange Private Limited, to explore business opportunity in the voluntary of carbon market. Poonawalla FinCorp is aiming to build a loan book of 50,000 crores in the next 5 years. Chairman Adar Poonawalla. And lastly, promoter Jamnalal Sons increased its stakes in NBFC giant Bajaj Finserv on Tuesday in a block deal. The promoter purchased equity shares to the tune of 100.41 crores in the open market. Thank you so much.